Hello everyone. Today will study the solution of exercise 5.1. Now the exercise 5.1 in question number 1. Prove that the function f(x) is equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0, at x equal to minus 3 and x equal to 5. The solution of question number 1, as you know that if the limit of the function is equal to the value of the function, then you can say given function is continuous. It means at if at x is equal to 0, limit x tends to 0 of f(x) is equal to limit x tends to 0 fx means 5x minus 3. If you are putting the limit, then you get the 5 into 0 minus 3, that is minus 3. Now f of 0 is equal to 5 into 0 minus 3. So again you get the minus 3. So since limit x tends to 0 of fx is equal to f of 0 is equal to minus 3, therefore given function is continuous at x is equal to 0. Similarly, at x is equal to minus 3, at x equal to minus 3, so again you have to find the limit x tends to minus 3 of fx, that is limit x tends to minus 3, fx means 5x minus 3 is given, and if you are putting the limit, so then you get the 5 into minus 3 in minus 3, so that is minus 8, 5 is a minus 15, minus 15 minus 3, so that will be the minus 18. Now f of minus 3, so 5 into minus 3, that is again you get the minus 3 minus 18. Therefore limit x tends to minus 3 of fx is equal to f of minus 3 is equal to minus 18. Therefore fx is also continuous at x is equal to minus 3. Similarly, you can do for x is equal to 5. Question number 2 is also similar to question number 1. Now the question number 3. Question number 3. Examine the following function for continuity if fx is equal to x minus 5. fx is equal to x minus 5. So solution here, there is no any point is given at which the find the function fx is equal to fx is continuous. So then let x is equal to c is the element of R. Limit of the function, that is x tends to c of fx, that is limit x tends to c minus 5, or that is x minus 5, and put the limit, so then you get this c minus 5, which is equal to the fc. Therefore fx is continuous at x is equal to c is the element of R. Second, this is the A part. Now B part, since fx is equal to 1 upon x upon 5, again function is
not defined at x is equal to 5. Therefore f(x) is not continuous at x is equal to 5, and you can say f(x) is continuous at all point except x is equal to 5. तो x इक्वल टू 5 पे कंडीशन नहीं हो, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू यहाँ 5 पुट करते हैं तो पूरे फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी. तो let x is equal to c is the element of R. Now limit x tends to c of f(x), that is limit x tends to c of 1 upon x minus 5, that is 1 upon c minus 5, and you get that is fc. Therefore f(x) is continuous at all x is the element of x is equal to c is the element of R except x is equal to 5. Now c part, c, so c let function is given. So now x, again we are seeing that f(x) is equal to, this is given, x square minus 25 upon x plus 5, and if you are simplifying, then you get x minus 5 and x plus 5 divided by x plus 5, you get the x minus 5. So therefore let x is equal to c is the element of R, where limit x tends to c of f(x), that is limit x tends to c x minus 5, that is c minus 5, and if you want to find the function at a limit, function at a point c, that is fc, so again you get this c minus 5. Therefore f(x) is continuous at all x is equal to c is the element of R except x is equal to minus 5. Similarly you can do the d part also. Now the question number 4. In question number 4 we are seeing that this is the polynomial function. So as you know that all the polynomial function is continuous, therefore f(x) is equal to x power n is continuous. So this is the solution. Okay, since f(x) is equal to x power n, which is polynomial function, as we know that polynomial function is always continuous at all x is the element of R, therefore f(x) is continuous. Question number 5.
Question number 5 is the function f defined by the fx is equal to this much, continuous at x equal to 0, x equal to 1, x equal to 2. So you have to check if this function is continuous at x equal to 0, x equal to 1 and x equal to 2. So first take at x is equal to 0, at x equal to 0, अगर x equal to 0 लेके चलते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव ऑफ fx, or this you can write it limit s tends to 0 f of 0 minus h, where h is be smaller values. तो अगर हम इसके देखते हैं, अब इसके लिए फंक्शन क्या आएगा कि अगर हमारा 0 से लेस है तो 0 से लेस के लिए फंक्शन को यहाँ पे देख रहे हैं कि x की वैल्यू 1 से लेस है, तो x की वैल्यू 1 से लेस है मतलब 0 भी 1 से लेस हो सकता है, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन आ जाएगा, x आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट s टेंस टू 0 और यहाँ लिखेंगे 0 माइनस h, यानी ये x होना चाहिए, x को हम क्या लिखेंगे 0 माइनस h, और इफ putting the limit then you get the 0. Similarly right hand limit, तो right hand limit x टेंस टू 0 पॉजिटिव लिखते हैं ऑफ fx, और दिस कैन यू राइट इट लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, एंड दिस इज द लिमिट s टेंस टू 0 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर जो है किस में आएगा, 0 से ग्रेटर जो अगर इस देखेंगे तो हमारा जो है 1 से लेस तो फंक्शन ये है, और 0 से ग्रेटर कोई फंक्शन दिया नहीं है, तो इसी में 0 से ग्रेटर क्योंकि ये फंक्शन जो हो रहा है 1 से ग्रेटर हो जाएगा, तो हम इसी फंक्शन में देखेंगे जो x है, तो अगेन दिस यू कैन राइट द 0 प्लस h which is written in place of x. So again you get the, if you are putting the value of h then you get the 0, and f0 if you are finding the f0 so again you get the 0. So since left hand limit is equal to right hand limit is equal to f0 is equal to 0, therefore fx is continuous at x is equal to 0. Now at x equal to 1, at x equal to 1 पे अगर चेक करते हैं तो 1 से लेस देखना और 1 से ग्रेटर देखना है, तो अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव ऑफ fx, और this can you write in the form of h tends to 0, it means f of 1 minus h, और f of 1 minus h मतलब कि 1 से लेस, तो 1 से लेस के लिए हमारा फंक्शन कौन सा है, 1 से लेस के लिए हमारा फंक्शन x है, तो यानी हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे लिमिट s टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस h, और इफ यू आर पुटिंग द लिमिट तो देन यू गेट द 1, एंड right hand limit is equal to limit x tends to 1 positive of fx, that is limit s tends to 0 f of 1 plus h is equal to limit s tends to 0 f of 1 plus h, और 1 plus h के लिए कौन सा फंक्शन दिया है कि x 1 plus h मतलब कि 1 से ग्रेटर, इट मीन्स 5 इज गिवन, तो दैट इज 5. So since left hand limit is not equal to right hand limit, therefore fx is not continuous. fx is not continuous. Similarly you can find the at x is equal to 2. So at x is equal to 2, if you are finding the, then left hand limit s tends to 0 f of 2 minus h, ऑफ x इक्वल टू 2 के लिए कौन सा फंक्शन आएगा कि x की वैल्यू यहाँ क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 के लिए भी सेम फंक्शन आएगा 5, तो दैट इज 5, राइट हैंड लिमिट तो लिमिट s टेंस टू 0
or in place of this is the f2 plus h, and if you are taking the f2 plus h, then again you get the 5. So this and the now the find the value of f of 2. So f of 2, again you get the 5. So since left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 2, therefore fx is continuous at x is equal to 5, not x equal to 5, x equal to 2, at x equal to 2, at x equal to 2. Now the question number 7. Question number 6 is similar. So now the question number 7. Question number 7. In question number 7, now the solution of question number 7. Okay. Here mod of x plus 3 is if x is less than -3, और x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में लाई करता है तो इसके लिए -2x फंक्शन है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो इसके लिए 6x+2 फंक्शन है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि कौन कौन से पॉइंट मिलेगा कि अगर हम x की वैल्यू -3 लेके चलते हैं तो x से लेस के लिए -3 वाला फंक्शन ये दे रखा है, और x से ग्रेटर के लिए -3 के लिए आपको ये फंक्शन दे रखा हुआ है, और ऐसे ही लेस देन 3 के लिए आपको ये फंक्शन दे रखा है, और 3 से ग्रेटर के लिए हमारा ये फंक्शन दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस का भी साइन होगा, इक्वल का भी साइन होगा, एक्स लेस इक्वल टू -3। तो सबसे पहले अगर हम निकालते हैं एट एक्स इक्वल टू -3 और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू -3 फिर नेगेटिव साइन ऑफ एफ एक्स, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एस टेंस टू 0, और इसको लिखेंगे एफ ऑफ -3 माइनस एच। तो -3 से लेस के लिए कौन सा फंक्शन हमारा ये है, और अगर मार्ड में दिया हुआ है तो यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव। तो लिमिट एस टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे मार्ड ऑफ -3 माइनस एच प्लस 3, और इफ़ यू आर पुटिंग द लिमिट एच टू 0 तो मार्ड ऑफ -3, अगर मार्ड से बाहर निकलता है -3 तो +3 बन जाएगा, और +3 मिलके 6 बन जाएगा। अगेन राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंस टू -3 पॉजिटिव साइन ऑफ एफ एक्स, एंड दिस यू कैन राइट इट लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ -3 प्लस एच। अब हमको -3 से बड़ा वाला फंक्शन लेके चलना है, तो -3 से यहाँ पे देख रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन -3, तो इसके लिए ये फंक्शन है -2x। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो लिमिट एस टेंस टू 0, और यहाँ क्या लिखेंगे 2 ऑफ -3 प्लस एच, और दिस साइन इज नेगेटिव इज गिवन, -2x है, और x के जब हमने -3 प्लस एच पुट कर दिए हैं, इफ यू आर पुटिंग लिमिट एस टेंस टू 0 देन अगेन यू गेट दी 6। नाउ एफ ऑफ -3, अगर आप -3 पॉइंट करते हैं तो क्या आएगा, लिमिट यहाँ पे फंक्शन में पुट करेंगे, तो इसके लिए सेम फंक्शन ये दे रखा है कि मार्ड ऑफ इसकी जो है जो वैल्यू होगी मार्ड ऑफ 3 + 3, दैट इज 3 + 3 इट मीन्स 6। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ -3 is equal to 6, therefore fx is continuous at x is equal to -3. Now you have to check at point 3, तो at x equal to 3, अगर हम x equal to 3 पे चेक करते हैं, at x is equal to 3, तो लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स,
or limit s tends to 0 f of 3 minus h, and this you can write it 3 से लेस फंक्शन। तो 3 से लेस फंक्शन कौन सा दिया है, -2x। तो इट मीन्स हो गया लिमिट s टेंस टू 0, और यहाँ पे लिखेंगे -2x, तो -2 इंटू -3 माइनस यस। इफ यू आर सिंप्लीफाइंग देन यू गेट दी 6 ऑन राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट एस टू डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, s टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच, और -3 यहाँ पे डायरेक्ट होगा 3 प्लस 3 माइनस एच। तो 3 माइनस एच, 3 माइनस एच माइनस -6, इस तरह से -6 बनेगा। और 3 प्लस एच निकालेंगे, 3 से ग्रेटर के लिए 6x प्लस 2 है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि लिमिट लिमिट ये लिखते हैं लिमिट एस टेंस टू 0, और यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या है 3x प्लस 2 6x प्लस 2। तो 6x के पे लिखेंगे 3 प्लस एच और प्लस 2। तो इस तरह से यहाँ पे जो अगर लिमिट पुट करते हैं तो बन जाएगा 20। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर fx is discontinuous, fx is discontinuous at x is equal to 3, at x equal to 3। तो x इक्वल टू -3 पे फंक्शन कंटिन्यूस है एंड x इक्वल टू 3 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 are the similar question. Now I'll take the question number 17. Question number 17. In this question, you find the value of a and b. Find the value of a and b so that the function defined by fx is equal to ax plus b if x is less or equal to 3 and इतना x is greater than इतना is continuous at x equal to 3। तो x इक्वल टू 3 मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हमें a और b का रिलेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन एट x इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 3 माइनस एच। 3 माइनस एच मतलब कि 3 से छोटा, और 3 से छोटा के लिए हमारा फंक्शन क्या दिया ax प्लस 1 है। तो हम क्या लिख सकते हैं लिमिट s टेंस टू 0 a 3 माइनस एच प्लस 1, और इफ़ यू आर सिंप्लीफाइंग देन यू गेट द 3a प्लस 1। मतलब यू आर पुटिंग द लिमिट h टेंस टू 0, मतलब h की जगह पर 0 पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा 3a प्लस 1 मिल जाएगा। और ऐसे ही अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 3 प्लस एच। तो राइट मतलब कि x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है, तो इसके लिए हमारा फंक्शन कौन सा आएगा bx प्लस 3 आएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं लिमिट s टेंस टू 0 b 3 प्लस एच और प्लस 3। अगेन इफ यू आर सिंप्लीफाइंग पुटिंग द लिमिट in this in place of h, so then you get the 3b plus 3, 3b plus 3, now 3b plus 3। so we are seeing that the function is already continuous is given, therefore left hand limit is equal to right hand limit, since fx is continuous at x equal to 3, therefore left hand limit is equal to right hand limit। This implies that in place of left hand limit you can write 3 plus 1, or in place of right hand limit you can write 3b plus 3। if you are simplifying 3a minus 3b, so then you get the 3 minus 1, or that will be the 2। if 3 is the common, a minus b, or a minus b is equal to 2 by 3। so this is the relation between a and b if function is continuous at x equal to 3। now the question number 18। question number 18 कि for what value of lambda इतना 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 is continuous at x equal to 0 and what about the continuity at x equal to 1। अब वो अगर हम इसके लिए देखना है x equal to 0 पे देखना है,
तो सोल्यूशन लिखेंगे इसका, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, दैट इज लिमिट s टेंस टू 0। अब 0 से लेस के लिए फंक्शन कौन सा हमारा है, ये है, क्योंकि यहाँ पे x लेस इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसके लिए 0 के लिए लेस और इक्वल के एक ही फंक्शन आएगा। तो देन यू कैन राइट इट लैम्डा, in place of x you write the 0 minus h का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस h, और if you are putting the limit, so then you get the, that will be the if you are simplifying then you get the 0 if you are putting the limit h tends to 0, मतलब in place of h you are writing the 0, so then you get the 0 is multiplied by lambda, again you get the 0, and right hand limit s tends to 0 f of 0 plus h is equal to लिमिट s टेंस टू 0। अब 0 प्लस h मतलब कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो दैट इज 4, ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन ये है 4 0 प्लस h प्लस 1, तो इट मीन्स अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ लिमिट पुट करते हैं तो क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि लेफ्ट लिमिट हमारा जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, और राइट लिमिट क्या आ रहा है हमारा 1 आ रहा है। तो इस तरह से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल नहीं है, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, therefore f is not continuous, therefore f is not continuous at x is equal to 0 for any value of lambda. Now you have to check the continuity at x equal to 1. So at x is equal to 1, if you are finding the limit, left hand limit, that is limit s tends to 0 f of 1 minus h, that is 1 से लेस फंक्शन। तो x जो ग्रेटर फंक्शन है, x इज ग्रेटर देन 0 ये दिया है, तो 1 से लेस मतलब किस में आएगा, इसमें आएगा, क्योंकि 0 से लेस के लिए हमारा ये है, तो 0 से ग्रेटर के लिए ये है, और हमारा 1 से बड़ा चाहिए और 0 से छोटा चाहिए, नो। तो x इज ग्रेटर देन 0 दे रखा है, तो हमें क्या लेना है कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो हमारा फंक्शन कौन सा आएगा, 4x प्लस 1 आएगा। तो दैट इज लिमिट s टेंस टू 0 4, you can write here 1 minus h, in place of x you have to write the 1 minus h plus 1, or if you are putting the limit then you get the 5. And similarly right hand limit, to limit s tends to 0 f of 1 plus h, if you are putting the limit s tends to 0, so again you get the same function 4 into 1 plus h plus 1, again you get the 5, and f of 1 is equal to 4 into 1 plus 1, so then you get the 5. So since left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 1 is equal to 5, therefore fx is continuous at all at all x is equal to 1, at all x is equal to 1. So this is the solution of the question number 18.